तो भाई लोगों, अब इस तरह का आपको एक बैन मिलेगा जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 200 बाट। पहले इस तरह की एंट्री नहीं होती थी। फुल मून पार्टी में आपका स्वागत है। ये फुल मून पार्टी। एंटर करते ही आपको ये खाने के आइटम मिल जाएंगे। 100 से 150 बाट इनका प्राइस है। We will be back and have it. फुल मून पार्टी, जिसे अब एशिया का एक सबसे बड़ा इवेंट भी कह सकते हैं। इस पार्टी को अटेंड करने के लिए हर महीने यहाँ 20,000 लोगों का जमावड़ा लगता है। ये है जापान से और इनका नाम है यूकी। यहाँ आपको हर जगह फायर एक्टिविटीज़ और दारू में भंड लोगों की भीड़ नज़र आएगी। बेफिक्रे लोगों की भीड़ में आप खुद भी अपने आप को बेफिक्र ही महसूस करेंगे। अगर आप इस फुल मून पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको करीब 2 से 3 दिन का यहाँ पे होटल स्टे लेना ही पड़ेगा। और आपके लिए बेहतर होगा आप एडवांस बुकिंग ही कर लें, क्योंकि एक मेन इवेंट है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ दी होटल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो आपको अपनी बिलोंगिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ नशे में लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये फुल मून पार्टी सुबह तक चलती है, तो अपनी एनर्जी को जितना स्टोर कर सकें उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ताकि आप मॉर्निंग तक सरवाइव कर सकें। अगर आप मेरी तरह यहाँ सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी देने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
one in the eye, that kid is low. You nasty, but I like your type. I'm like T-Ass, whatever you like. Bring your girls, whatever tonight. Your man just left on the plumber tonight. I check your pipe. Show me the. तो भाई हमें ये बकेट मिली है 300 बाट की, जिसमें 3 बियर की बॉटल्स हैं और आइस क्यूब डाल के दिए हैं, स्ट्रॉ सब डाल के दिया है, 300 बाट का। Check, check, 1, 2, 1, 2, yeah. You know I'm coming with the fire. Man, spin the rhythm and again. Cause I'm coming with the play. You know we best off and standing from. Back way the flow. Step it from. फुल मून पार्टी जिसमें हमने फुल एंजॉय किया।
2 o'clock है ना, अब 2 o'clock हो चुके हैं और हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है। ड्रीम था मेरा ये इस पार्टी को अटेंड करने का, फाइनली हमने अटेंड की। अब निकलते हैं होटल की ओर, जो कि अब बहुत थक चुके हैं। बाय।